Wings with V. So those who are new, hi, my name is Anshika and welcome to another episode of Wings वाली दिवाली. So as you guys already know कि हमारे चैनल पे एक बहुत ही प्यारी सी सीरीज मैंने अभी स्टार्ट करी है, that is Wings वाली दिवाली. एंड उसका ये एक स्पेशल एपिसोड इज दिवाली इज लाइक जहाँ पे आपको फैमिली गैदरिंग्स पे जाना है, डिनर्स पे जाना है, पार्टीज पे जाना है, आपके घर पे बहुत सारे लोग आते हैं और ऐसे टाइम पे आपका मेकअप और आपकी हेयर स्टाइल ऑन पॉइंट होना चाहिए. एज यू गाइज ऑलरेडी नो मेकअप वीडियोस आपको डेफिनेटली मिलेंगी ही, बट देन आई थॉट कि मैं एक हेयर स्टाइल वीडियो भी आपके साथ शेयर करती हूँ दैट हाउ आई स्टाइल माई हेयर ड्यूरिंग फेस्टिवल. बिकॉज ऐसे टाइम पे जहाँ इतनी जल्दबाजी रहती है उस टाइम पे अपने हेयर को सेट करना एंड दैट टू सैलून लाइक हेयर एट होम इज वेरी डिफिकल्ट. एंड लेट मी शो यू हाउ आई स्टाइल माई हेयर विद द हेल्प ऑफ Dyson Airwrap multi styler for salon like hair at home. It is faster, easier, efficient and definitely no extra heat damage. एंड जब आपको डेली स्टाइल करना पड़ता है एवरीडे हेयर स्टाइल के लिए तो मैं सजेस्ट करूंगी कि अपने बालों को उतना हीट मत देना. दिवाली के टाइम पे ऑलमोस्ट मुझे 3-4 दिन बहुत सारी ऐसी चीजें रहती है जहाँ पे हमें डेली गैदरिंग्स होती रहती है, तो उस ड्यूरेशन में मैं कैसी हेयर स्टाइल्स बनाती, उस ड्यूरेशन में आप कैसे अपने हेयर को स्टाइल कर सकते हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं. सो मैंने अपना हेयर वॉश अभी इवनिंग में ही करा था एंड इट्स लाइक क्वाइट ड्राई, बट मैं अभी इन्हें फिर से थोड़ा सा ड्राई करूँ. मैं यूजुअली अपने हेयर को ओपन ही रखती हूँ बिकॉज वो मुझे ज्यादा बेटर लगता है. बट हेयर ओपन में भी अलग अलग तरीके होते हैं, आप नॉर्मल हर बार ऐसे नहीं रख सकते हैं. बिकॉज मैं पहले ऐसा करती थी कि मैं जो भी मतलब मेरा आउटफिट है मैं कभी भी हेयर स्टाइल पर उतना ध्यान नहीं देती थी, बट हेयर स्टाइलिंग इज एन एसेंशियल पार्ट, आप उसे स्किप नहीं कर सकते हैं. तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ 3 हेयर स्टाइल जो आप यूज कर सकते हैं अपने इस दिवाली फेस्टिव सीजन में. एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जंप टू द वीडियो. So this is my hair happiness product and this is the Dyson Airwrap multi-styler. Features new and re-engineered attachments powered by enhanced Coanda airflow attachments. So firstly start with towel dried hair and apply your favorite styling products. Just comb the mid-lengths and ends with a detailing comb and that's it. Now we can attach the Coanda smoothing dryer, a multifunctional attachment that quickly prepares hair for styling. Now select the drying mode and choose high speed, high heat and pre-dry your hair ताकि हमारे जो बाल हैं वो अच्छे से सूख जाएं और जो हेयर स्टाइल हमने सोचा है वो अच्छे से बन सके. एंड द वेरी फर्स्ट हेयर स्टाइल जो मैंने सोची है इज बॉलीवुड वेव्स. ये मैंने बहुत बार देखा है सो मैं यही करने वाली हूँ आज. सो डिवाइड योर हेयर इनटू मल्टीपल सेक्शन and attach the 30 mm long barrel to create voluminous curls and waves in both the direction. Set the airflow direction to curl outwards from the left side of your face. Take the bottom section of your hair and hold it in place until dry. Set the curl with cold shot for 10 seconds and repeat the same at the top section of your hair. Next, change the airflow direction for the other side of hair and repeat on the other side. That's good.
And to add more body and shape to your hair, attach the round volumizing brush and choose medium speed and medium heat. And then create volume at the crown area and touch up front hair pieces to finish up the look. And that's it. Here is my first look. I hope you like the look because I am in love with this hairstyle. This is super easy, super efficient and long lasting as well. So you can use this hairstyle in any occasion. Also you can try this hairstyle in wedding season also, because मैं ये try करने वाली हूँ wedding season में. So yeah, let's move on to the second one now. So here is the day 2 and I'm planning to go with fluffy low bun, because yesterday I've created Bollywood waves and my hair are kinda wavy right now. So let's just go with fluffy low bun because it's super easy and I don't have much time also. So I will just gather my wavy hair and using an elastic band I will just secure into a low ponytail at the back of the head towards the nape of the neck, and then I will twist the ponytail into a bun and I will just use one elastic, that is rubber band, and some bobby pins as well as some juda pins to secure my low bun. And here comes the plus point of this hairstyle. To achieve a super smooth finish, use the Dyson Airwrap multi-styler flyaway attachment on the crown of your head and select high speed and low heat and brush the flyaways into place. And this will give you that sleek look, sleek low bun or low ponytail, anything you can go with. And for the front section, I'll again attach the round volumizing brush and choose medium speed and medium heat because it will give that bounce in the front section. And this is a perfect volume and perfect hairstyle for every day. That's good. So here comes the day 3 and I am getting ready for my family dinner. And as you can see, my hair are wet, so I'll just comb mid-lengths and ends with a detailing comb, and I will attach the Coanda smoothing dryer, which is a multifunctional attachment that quickly prepares hair for styling. I'll just select the drying mode and choose the high speed, high heat and pre-dry my hair. Now I'll section my hair into 6 sections, 3 on left, 3 on right, and attach the round volumizing brush to add body and shape to my hair as it dries. Choose medium heat, medium speed and place the brush under the first section and brush through the hair. More height will add more volume of course, and just roll up from tips. When dry, set the curl and wait for 10 seconds at least, and roll the section with your hand and secure with a clip because ये ज़्यादा time तक चलेगा blowout. Otherwise you can just leave it like this, but I usually prefer to roll up and just secure it with the clips for at least 1 to 2 hours. Yeah. And leave your hair to set for a while, and then you can remove the clips and comb through the hair with a detangling comb for a fluffed up look. You can just wait for the result. This look is my personal favorite.
सो हेयर कम्स द फाइनल हेयर स्टाइल, द मोस्ट अवेटेड हेयर स्टाइल, जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है. सो ब्लो आउट इज़ माई पर्सनल फेवरेट, जो आप कभी भी कर सकते हैं. एंड ये दोनों हेयर स्टाइल के कंपेयर में आई गेस ये सबसे ईजी है और सबसे ज़्यादा प्यारी भी लगती है. सो मैं हाईली सजेस्ट करूँगी ये वाली आप एक बार ज़रूर ट्राई करें. So guys, that's it for today. I hope you enjoy my today's 3 festive hairstyle and these are super easy. So ये आप definitely try करके मुझे comment section बताएंगे कि आपको ये 3 hairstyle कैसी लगी है. And my personal favorite is this one, इसलिए मैंने इसे last में रखा था. So आप मुझे बताइए कि आपको सबसे अच्छी hairstyle कौन सी लगी. इसके अलावा अगर आपको और ऐसी hairstyle देखनी है तो please मुझे comment section बताना, मैं ज़रूर share करूँगी. That's it for today. I'll see you in my next video. Till then, keep smiling. Bye.